इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो करेक्टरिस्टिक्स जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उनके साथ डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो कर सकते हैं। तो इसके पर्पस के लिए हम जो है वो कर्सर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ यूजिंग द एल्टी स्पाइस नंबर्ड कर्सर्स इनको देख लेते हैं। ओके, रीड द डेटा पॉइंट्स वैल्यूज यूजिंग द एल्टी स्पाइस नंबर्ड कर्सर्स। एल्टी स्पाइस allows the waveform viewer attached number cursor. There are two cursors, 1 and 2. अभी हम देखेंगे कि वो क्या है। Feature to read the horizontal and vertical axis values at a particular point on the plotted graph. By attaching two cursors to a trace, the user can measure a displacement, time delay, slope, maximum and minimum values, impedance measures, rise and fall times, and related measures. The cursor can be dragged along the plot and they follow the waveform. When the cursor is attached, the floating cursor window or data window pop up, providing amplitude and magnitude levels, times and frequency information. इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जब हम एल्टी स्पाइस का जो आउटपुट है, सिमुलेशन जो आउटपुट है, उसके ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो एक कर्सर जो है वो नज़र आएगा। ये कर्सर, ये लाइन है, ये कर्सर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के यहाँ नज़र आएंगे, यहाँ लिखे हुए नज़र आएंगे इस स्टेटस बार के ऊपर। और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें नज़र आएंगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, विद द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट। इसी तरीके से सेकंड कर्सर को भी हम आउटलाइन कर सकते हैं। अब ये कर्सर 2 है, जब इसके ऊपर हम लेके जाएंगे तो कर्सर 2 नज़र आएगा। 0.9 वोल्ट के ऊपर क्या स्टैटिस्टिक्स हैं वो अब हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर हम कर्सर 2 को सेलेक्ट करेंगे तो कर्सर 2 के जो पॉइंट्स और कर्सर 1 के पॉइंट्स जो हैं वो अब हमें नज़र आ रहे हैं कि क्या है। जबकि आप देखिए कि जो डायोड के अंदर जो वोल्टेजेस और करंट्स जो हैं उनकी वेरिएशन जो है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमें यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो बाय यूजिंग दीज कर्सर्स जो है वो पॉसिबल है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है ये यहीं तक करेक्टरिस्टिक्स इसके या प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड नहीं है। अभी हम देखेंगे मज़ीद इसमें कि क्या क्या चीज़ें और पॉसिबल हैं। इसके बाद इसका ये प्रोसीजर दिया हुआ है। अब हम इसके बाद इस प्रोसीजर को स्किप करते हुए नेक्स्ट अटैचिंग द नंबर्ड कर्सर इसकी बात करते हैं। ओके, फर्स्ट डिलीट द MES डायरेक्टिव स्टेटमेंट यूजिंग द कट टूल एंड अनचेक द ग्रिड चेक बॉक्स। ये अब हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने इसको जो विंडोज़ हैं हमारे पास उनको हमने टाइल वर्टिकली कर लिया। अब इसके बाद कट टूल जो है ये हमारे पास मौजूद है। कट टूल को हम यूज़ करेंगे और इससे हम ये जो MES की वैल्यू है इसको हमने ख़त्म कर दिया है। ओके, अब इसके बाद हम स्केप प्रेस करेंगे तो कट टूल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमें एक जो ग्रिड चेक बॉक्स है उसको ख़त्म करना है। और लेट्स सी वेयर इज़ द ग्रिड चेक बॉक्स। Okay, it should be somewhere. Okay. Okay, these are the control panels. Okay, this is here, show grid. So we just need to uncheck it. So if we uncheck it,
the grid on the back side of this diagram will not be available and gone. So this implements the this grid checkbox. We unchecked it. To attach the cursor one, first right click on the name of the trace waveform, that is ID1, to open the expression editor. So we primarily attach the cursor one, first right click over the name of the trace waveform to open the expression window, and then click on the first scroll down menu next to the attached cursor field. See figure 4.52. Okay, see figure 4.52 अब हमने देखनी है. Let's see where is the figure 4.52. This is figure 4.60. Let's go to the figure 4.52. Okay, here is the figure 4.52. Using the built-in functions in the expression editor window, in which the attached cursor is available. Let's see how it primarily open up. Okay, so to use, user can right click on the waveform name, that is to have a drop down box that allows attaching the first or second or both numbered cursor values as they are shown in the figure. Okay, so let's see how we can do it. So we go there, and when we right click it, and this is the expression editor they are talking about, and now we can attach the first cursor, second or both cursors. We need to attach the first cursor. Now moving back towards 4.60 figure. Okay, this was the 4.60 figure, and we are primarily here. We are at the this step, that in which the first click over the name of the trace waveform, that is ID1, to open the expression editor, and then left click on the first scroll down menu next to the attached cursor field. The action brings up the crosshairs on the plot pane along with the floating cursor windows displaying the initial location of the cursor one. Okay, see the figure 4.60. So we can change the color as well. We can okay. So now we can move it. Okay, let's do it the steps so that it will become completed. Now move a mouse over the crosshair. When the cursor one is placed by default to see the yellow color as shown in figure 4.60. So we see where what is happening in the cursor 4.60. So we just primarily closed it. Click to access the plot menu, floating little cursor window. We already seen this cursor one yellow color. Okay, let's see again. Okay, cursor one, let's take it to the yellow color. Okay, it primarily color the graph to the yellow, which is not desirable. Revert back.
Okay, now we primarily moved our cursor to 0.8 volt, and teletext box next to the horizontal field shows 0.8 volt or 800 millivolts. Now down a value in a text box next to the word field in the cursor window for the operating diode current value. A current through the D1 can be read as, so see figure 4.61. Let's see figure 4.61. Okay, figure 4.61, as you can see, it should display the value of the voltage and the current as it can be written over here. Okay, the cursor readout display for the diode current at this. Okay, so for this we have to select the plot settings, and then we have to make it label cursor. Okay, label cursor. Okay, so it is done through the cursor position is labeled by selecting the plot setting, notes and annotations, label cursor. Okay, under the plot menu as shown in figure 6. So this point we have to do it under the plot settings and under the notes. Notes and annotations and label cursor, because the cursor is not shown. Now the cursor is shown here. Now we can do the plot settings and notes and label cursor once. So in this way, now we can see the cursor over here. If we move this one to, let's say, 0.8 and click here at this cursor. Okay, now we can go to the plot and then annotation. It has now you can see it label the voltage as well as the current values. So this is the way how we can primarily on the plot we can show the voltage and current values by using this cursor. Okay, delete this one. Okay, this tool comes handy. Okay. Okay, now we can done. Now using the above expression editor, a window to plot expressions on traces. Okay. In the enter an algebraic expression to plot field box, figure 4.52, the user can type the expression voltage multiplied with current to measure the power or loss across the diode D1. Click OK to see the plotted graphs. So let's do it in 4.52. So we go to the figure 4.52. I remember we have already gone to the 4.52 and we can use the expression editor to plot it. Okay, let's do it. So figure 4.52 is if we right click here, it is primarily open up the expression editor and we can primarily select, let's say, cursor. Okay, user can type the expression.
okay, did not say that we primarily attach it to any cursor, but we can primarily, let's say, attach it to the second cursor, and we write it here. uh, Multiplied with I div. Okay. So this is cursor 2. So we take it to point 9, and at this point we want to level it, and this value is primarily here over here, the voltage multiplied with D2. So let's go to the plot setting, and we just label this cursor position, although it saying the voltage and the current, but the power dissipation appear over here, okay, over here, which is a value of 137.2 milliwatt. So this way we can primarily see the power dissipation through the diode. Now the next step is to establish the operating point, and this we will do it in our next video. Till then, Assalamu alaikum.